आगे, क्योंकि ये शो कॉर्पोरेट कनेक्शन, कॉर्पोरेट से जुड़ने का, उनसे कनेक्ट करने का। आज हमारे साथ हमारे साथ 3 कॉर्पोरेट होंगे। पहले हमारे साथ आज लेटेंट व्यू के मैनेजमेंट बनेंगे। हमारे साथ लेटेंट व्यू के मैनेजमेंट बात करने के लिए कंपनी पर आपको बता दें, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स से जुड़े हुए डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, और हमारे साथ राजन बाला वेंकटेश CFO हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के। उनसे बात करते हैं। राजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पे। वेलकम, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक बार जो हम नंबर्स का और रेवेन्यू का और मार्जिन का ट्रेंड देख रहे हैं, थोड़ा सा स्लिप तो हुआ है आपका EBITDA मार्जिन इस क्वार्टर में। हालांकि रेवेन्यूज़ की बात करें तो वहाँ से ज़रूर पॉजिटिविटी दिखी है। आप जोग्राफी वाइज आपकी बड़ी मार्केट्स ओवरसीज़ मार्केट्स हैं, और रेवेन्यू वाइज तो आपने क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, लेकिन EBITDA मार्जिन स्लिप हुआ है लगभग 7%। तो पहले तो आप इसका रीज़न ही बताएं। इसी परफॉर्मेंस पर व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि EBITDA मार्जिन पर प्रेशर क्यों था। बहुत ही धन्यवाद हमको शो पे बुलाने के लिए। तो जैसे आपने अभी समराइज किया, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर अस इस क्वार्टर में देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है हमको, विच इज ऑल्सो I would say in some sense a reaffirmation of all the investments that we have been making in the last couple of quarters. तो वो जो investments हमने किए हैं business में, that is now beginning to show results and which is also translating into revenue growth. हालांकि आप अगर previous quarter में देखेंगे, there was revenue growth जो था वो थोड़ा flattish था, but we are happy to be back on the growth trajectory. So that is a big positive for us in this quarter. हालांकि जब मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स ऑब्वियसली डेफिनेट फ्रॉम द अर्लियर क्वार्टर्स एंड आल्सो फ्रॉम द अर्लियर फिस्कल वी हैव रिपोर्टेड आई वुड से अ डिक्लाइन इन EBITDA margins, but a lot of this is also planned in the sense that we have made investments जो Q3 और Q4 of last year थे, हमने significant investments किए हैं जो फ्रंट एंड में जो सेल्स जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं who are there in the markets which are our focus markets. तो US और यूरोप में हमने काफी सारे additions किए थे सेल्स फोर्स में, and all of that happened in Q3 and maybe a vast majority of that happened in Q4. So उसका जो full impact है, the full impact of those investments in terms of the cost that we booked was seen in the current quarter. Also इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली वेज इंक्रीमेंट्स जो दिए हैं उसका हमको इम्पैक्ट दिखने को मिला है। तो इंडिया में आप देखेंगे क्लोज टू बिटवीन 9 to 10% हमने वेज हाइक्स किए हैं अक्रॉस द बोर्ड ऑन एन एवरेज, एंड जो यूएस हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पे अराउंड 4 to 5% ऑफ वेज इंक्रीमेंट्स किए हैं। सो दैट अगेन हैड एन इम्पैक्ट ऑन EBITDA मार्जिन्स। और आप Q1 देखेंगे, टिपिकली जो वीजा एक्सपेंसेस रहते हैं, क्योंकि जो H1B के जो अलॉटमेंट्स होते हैं that those happen in Q1, and the visa costs typically are booked in quarter 1. So there is a little bit of seasonality over there. So these were the 3 factors that contributed in the decline in EBITDA margins. All but right. आप अगर हमारा जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखेंगे और इवन हमारा जो हिस्टोरिकल if you look at our historical results, our EBITDA margins have been in the range of 25 to 28%. हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, we believe that these investments will take some time for them to show up on the revenue side. We believe जो H2 रहेगा, we should see some bit of recovery on the demand side, and then थोड़ा जो operating leverage है वो play out होगा, and we should start seeing EBITDA margins expand again in H2. ऑलराइट, तो आपने रीजंस हमें बताए, वेरी वेल एक्सप्लेन राजन, कि वेज हाइक एक बड़ा रीजन रहा है जिसके कारण, और एक थोड़ा सीजनैलिटी फैक्टर रहा है जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स पर प्रेशर था। आपके लिए, क्योंकि जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि आपकी कई सारी कंपनियां जो है वो फॉर्च्यून 500, और आपके पास रिपीट वैल्यू कस्टमर्स की बहुत बड़ी है, मोर देन 85% ऑफ योर रिपीट कस्टमर्स, मोर देन 85 इनफैक्ट। लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ा सा क्लाइंट साइड पर, क्लाइंट विन साइड पर समझना हो सिनेरियो, और स्पेशली टेक कंपनीज की साइड से समझना हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे हमारा स्टार्टिंग से यही फोकस रहा है दैट वी विल पोजीशन आवरसेल्व्स एज अ प्लेयर हु लाइक्स टू गो डीप इनटू अकाउंट्स। व्हेन आई से डीप, जो व्हेन वंस वी लैंड एन अकाउंट, जो हमारे जो बिजनेस है टिपिकली आप देखेंगे उसमें सेल्स साइकिल्स काफी लॉन्ग रहते हैं, एनीवेयर बिटवीन 6 to 9 months फॉर अस टू विन अ न्यू लोगो। सो देयर इज सब्सटेंशियल सेल्स एफर्ट दैट गोज इन टू विन अ न्यू लोगो, एंड देयरफॉर वंस वी गेट इन, जो हमारा एंडेवर ये रहता है कि वी शुड बी एबल टू लैंड एंड एक्सपैंड इनटू दोज रिलेशनशिप्स एंड मेक देम इनटू $1 million in year 1 and say $2 to $3 million in year 2. So that's the sort of strategy that we have adopted, and that has helped us also, so which is also reflected in the margin profile of the business. तो हालांकि ये हमारा ट्रेडिशनली यही अप्रोच रहा है,
in the recent times, we've also tried to invest significantly in the sales team, which will help us win new logos. So last quarter में आप देखेंगे, we were able to add close to about 5 logos. हालांकि each of these logos, the initial ticket size of our deals is fairly small, but hope ये है कि these deal wins will help us in converting these accounts into much larger accounts in the coming fiscal. But one of the things that has also happened in the recent times, जो economic situation है US में, is customers are taking longer time to sign off on newer initiatives, one. And also जो deal sizes हैं, हमने देखा है, specifically in the last couple of quarters, the deal sizes have become slightly smaller, or the initiatives have become smaller. But this is a short-term phenomenon. We definitely think that clients still have work to be done. These are all large Fortune 500 companies. तो इनके काफी सारे initiatives हैं जो उन्होंने हालांकि अभी they put it on hold. H2 में definitely there should be a bounce back that we will see, and then some of these ticket size issues or the size issues will get resolved automatically, and we should be back on a higher growth trajectory. Okay, all right, Rajan, got that. But क्योंकि आपके जितना भी revenue mix है उसमें large part technology vertical से है, एज कंपेरिजन अगर कंपेरिजन ड्रॉ करनी हो हमें दूसरे सेगमेंट्स लाइक इंडस्ट्रियल, BFSI या रिटेल, तो टेक्नोलॉजी का कितना ग्रोइंग फर्दर, कितना आपको लगता है कि एक्सपोजर मिल सकता है आगे, क्योंकि टेक कंपनीज से जो कंसर्न्स हैं वो अभी तक छटे नहीं हैं. See, the good news even within the technology verticals, just to give you a few names, for instance, we work with the likes of say an Adobe or a Microsoft. These are all very large accounts, right? तो अगर हम Adobe का सिर्फ एग्जांपल लेंगे, for instance, there are close to about 6 business groups. Today, our biggest engagement is with just one business group. And we believe that there is significant potential for us to mine the remaining groups as well, right? So, halaki technology is a large, I would say, vertical for us. Even for the scope for us to grow within some of the existing accounts is significantly high. And US, you would know that the technology vertical was the most resilient even through the pandemic, right? Yes, there is a little bit of a short-term blip in recent times. There has been a little bit of, I would say, cooling off that has happened. But these are all very large Fortune 500 companies. They have budgets to spend. It is just that in the short term, they've all put some of these newer initiatives on hold. We have very strong conviction that they will strongly bounce back and budget will start getting utilized in H2, and then the recovery should come through in the demand. It's quite a strong statement. यानी इससे स्मॉलर प्रोजेक्ट्स को इन्होंने होल्ड पे किया है, लेकिन आप बुलिश हैं और आपको कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग दिखती है कि जिस तरह की ग्रोथ और ट्रेजेक्ट्री की बात की जा रही है, इनफैक्ट जो बड़े ऑर्डर विंस टेक्नोलॉजी स्पेस से भी हैं वो बने रहेंगे. लेकिन एज यू ऑल्सो मेंशन राजन, क्योंकि आपका एक्सपोज थोड़ा सा तो रिसेशनरी प्रेशर है कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, स्पेशली हम US की बात करें तो एक रिस्क को अगर मिटिगेट करना हो या रिस्क को मेजर करना हो, तो क्या आपने उसे मिटिगेट करने के लिए या उसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं? Absolutely. तो जो रिस्क बिल्कुल आपने you've hit the nail on its head in terms of how do we mitigate the risk around our exposure to technology as well as exposure to the US, जहाँ पे recession का threat है. We have made significant investments in Europe in the last couple of quarters, right? Of course, these are all people that we've added, and quite a few of them have spent only about a quarter in the system. For us to start seeing results for these investments, it will take us a couple of quarters. So we very strongly believe that Europe in the next couple of years should contribute anywhere between 15 to 20% of our overall revenues, and we are making investments towards that. So that is one of the reasons why you will also see there is a little bit of pressure on the margins, because these investments today are generating suboptimal returns, right? But the belief is that in a couple of quarters, the revenue should start kicking in on the back of these investments that we are making in Europe. Secondly, BFSI, retail, CPG or industrials, ये सारे verticals which are outside of technology, we have made significant additions again, both on the account mining side as well as the new logo addition side. काफी सारे हमने investments किए हैं. So we are already beginning to see, especially industrials में आप इस quarter में results देखेंगे, there has been substantial momentum that we've generated in the industrials vertical. We are also beginning to see some green shoots in BFSI as well as consumers. We hope that the hope is that in H2, these two verticals, which is industrials and CPG and BFSI, will also start firing. And to some extent, the de-risking will happen from technology as well as Europe as US as a market.
राजन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक्स वेरी मच आज समय देने के लिए और ये सारी बात हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नटशेल में हम 2-3 बातें ये लेंगे कि थोड़ा सा आपके लिए EBITDA मार्जिन पे इस क्वार्टर में प्रेशर था, सीजनैलिटी फैक्टर था, वेज हाइक था, अदरवाइज रेवेन्यू की ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ है। आप टेक्नोलॉजी स्पेस से कोई कंसर्न्स बड़ी कॉशियसनेस आपको नहीं दिख रही है और आप बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं, इससे एक ग्राउंड रियलिटी हमें भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।